So today we are going to start for the heat and effects of heat. तो क्लास 8 में हीट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम लोगों ने क्लास 7 में भी डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर हम लोग हीट को और थोड़ा सा समझेंगे और बेसिकली इस क्लास में इस चैप्टर में हम लोग हीट के इम्पैक्ट और इफेक्ट को समझेंगे। So what are the things we are going to see in this chapter? Here is the points, that is heat and effects of heat, temperature, change in the state, as well as the thermal expansion. यही हम लोग का मेन टॉपिक होने वाला है, थर्मल एक्सपेंशन की थर्मल एक्सपेंशन होता क्या चीज है. So let's understand more on this heat. Before we go ahead, we will understand once again what is heat. Heat होता क्या चीज है. In a simple way, we can say that heat is a form of energy. जब भी हम लोग किसी भी दूसरे form of energy को define करते हैं, उसी तरह से हम लोग heat को भी define कर सकते हैं एनर्जी. और इस हीट एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी body which is due to the movement of the particles of that particular matter. And you know that different objects can be experienced to be as hot or cold. So that experience, what we do use to say as hot or cold, that is on the basis of how much heat it is having. कितना हीट उसके अंदर होता है, उसके बेसिस पर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं that how much hot that object is or how much cold that object is. So different objects do have different amount of heat in that. And on the basis of that amount of heat, we can also understand the kinetic movement of the particles or the kinetic arrangement of the particles in a matter. हम लोग जब किसी भी तरह के मैटर को स्टडी करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उस मैटर को हम लोग देख सकते हैं. नॉट ऑल द मैटर्स बट सम ऑफ द स्पेसिफिक मैटर्स कैन बी एक्सपीरियंस इन इट्स थ्री बेसिक स्टेट्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो स्टेट है, ये जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड या गैस की, दिस इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ओवर देयर. So in solid, the particles are tightly packed. In liquid, the particles are slightly far away from each other. And in gases, the particles are very much far away from each other. Now, when we used to study this one, then we do come across some of the basic properties also, such as the intermolecular attraction force of the particles. In solid, the particles are very much tightly packed. It's because the intermolecular attraction force is maximum. In liquid, the intermolecular attraction force is little less, and in gases, the intermolecular attraction force is quite low. And because of this only, we do use to observe that much space can be observed between the particles of a liquid, as well as higher amount of space can be experienced in the particles of the gases. तो ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिर कुछ और भी कंडीशन को लेकर आता है. तो हम लोगों ने देखो ये सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से को लिंक्ड हैं. जब हम लोग कहते हैं कि सॉलिड के सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक है, तो उसमें ये आ जाता है कि वहां पर हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है. अगर लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो स्पेस ज्यादा होगा. अगर स्पेस ज्यादा होगा तो एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, द काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो मिनिमम होती है, लिक्विड्स के अंदर ये मूवमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, गैसेस के अंदर ये मूवमेंट और ज्यादा होती है. And because of this kinetic movement of the particles, we do used to experience the amount of heat in that specific matter. तो जब हम लोग सॉलिड के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होती है, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंपैरेटिवली लेस देन टू द लिक्विड. लिक्विड्स में इससे ज्यादा होती है एंड गैसेस यूज्ड टू हैव मोर ओवर देयर. So because of this, when we do used to come to the amount of heat which they have, then you can say that the liquids are having or contain more heat than compared to a solid. Gases do have more amount of heat than compared to a liquid. Why? Because the sum of the kinetic and potential energy over there is maximum. So this determines the heat energy. तो heat energy जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो वहां पर आती है the sum of the kinetic and potential energy that is present in that specific matter. Now, when we need to represent any kind of physical quantity, we have to express it with a particular unit. So here also we do use a proper unit to represent the heat, that is joule.
सो जूल एक ऐसा यूनिट है एनर्जी का, as heat is also a form of energy, so we can use joule to represent heat energy also. But specifically for heat energy, we also do have a unit that is called to calorie. Calorie का भी use हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. So 1 calorie is approximately 4.2 joule. अगर हम लोग राउंड अप में लेते हैं तो 4.2 जूल आता है, और exactly देखते हैं तो वो approximately 4.184 जूल के बराबर आता है. So that is the amount. ना ये वाली टॉपिक जो है ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट. जब हीट कहीं पे सप्लाई होती है तो उस मैटर में किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं. Now, these changes are mostly focused to the conductors, but for the insulators, we don't observe these kind of changes over there. Now, if I do used to say for the conductors, then we know this thing that with the amount of the heat, when we change the amount of heat, we do used to experience the amount of temperature used to change. So if we are supplying heat, the temperature will also increase. If we are decreasing down the heat or we are taking out the heat, then the temperature will also डिक्रीज. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या सॉरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट बोल सकते हैं जो कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं in a body due to the action of heat. The next thing is that due to heat, we do use to observe chemical changes. So when there are particular kind of chemical reactions which used to take place under the presence of heat, or when the heat used to be supplied, then that specific reaction used to take place. We had already discussed about these things in detail in our previous classes. Now, because of supplying of heat to some kind of non-conducting materials, for example, if you take for a piece of wood, if you are supplying heat to it, it will not transfer heat, it will not increase its temperature, but it will catch fire. So due to supplying of heat, we do use to observe that the objects can catch fire also. Next is that due to supplying of heat, we do use to observe the change in the physical state of the matter. The physical state of the matter can be observed to be changed from solid to liquid and then liquid to gas when heat used to be increased. And if you decrease the heat, then you know that the change will be reversed. Gas will change to liquid and liquid will change to solid. That is also one of the effect of heat. And the last one is that when we do use to supply heat, then we do use to observe that the component or the material can expand. But remember that these things can be only observed for the conductors. अगर कोई कंडक्टर है और उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, तब हम देख सकते हैं कि वहां पर एक्सपेंशन होगी. Not only expansion, we can also observe that if heat will be absorbed in, then it will contract also. And that is the main topic which we have to understand in this particular chapter. जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, इफेक्ट्स ऑफ हीट को तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन इफेक्ट ऑफ हीट हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. So when heat used to be supplied to a conductor, then we do use to observe that it will expand, or heat, when the heat will be absorbed in, then it will contract. But again, I'm repeating, this condition only be observed for the conductors only, not all the materials. सारे materials में ये नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ conductors में होता है. खैर, तो ये इफेक्ट्स ऑफ हीट के रूप में हम लोग देख रहे थे. तो जैसे इफेक्ट्स ऑफ हीट में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. टेम्परेचर का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन द स्टेट का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम लोगों का मेन फोकस रहेगा टू the expansion or contraction in the different kinds of state of matter, whether it is solid, it is liquid, or it is gas. Means for the rigid body as well as for the for the fluid bodies. ठीक है, तो इन सब में भी किस तरह से ये चेंजेस होते हैं, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है इस चैप्टर. जब हम लोग बात करते हैं हीट के सप्लाई के लिए, जब हम लोग ये इफेक्ट्स देखते हैं कि either there is a change in their state or their change in the shape and size, or it catches fire, or changes in temperature, or chemical reaction takes place, over there we need to supply the heat. तो जब हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं तो हम लोगों को समझना चाहिए कि what are the methods by which we can supply this heat. So there are basically three methods or three conditions by which we can supply the heat. That is a conduction, convection and radiation. तो ये तीन मेथड है
जिसके बेसिस पर हम लोग हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। हीट की ट्रांसफर जो होती है, जब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम कैसे कोई इफेक्ट देखेंगे? हीट को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब तक हम लोग हीट को एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक हम लोग वहां पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट तो देख ही नहीं सकते हैं। सो वो कैसे ट्रांसफर होगा? तो हम लोग जानते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास 7 में डिस्कस कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ transferring of heat with the direct molecules to molecules. When the heat is transferring from one molecule to another molecule which are in direct contact, that would understand or that would be said to be as to the conduction. So यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सॉलिड्स, जो सॉलिड्स होती हैं, सॉलिड्स में इस तरह से कंडक्शन के मेथड से हीट की ट्रांसफर होती है। When we go for convection, so convection is a method of transferring of heat by the actual movement of the particles. Over here, the particles used to move. So this process used to go for any kind of fluid, whether it is a liquid, whether we are talking about a liquid or a gas. जब हम लोग किसी liquid या gas में हम लोग देखते हैं, तो heat के transfer के लिए जो process होते हैं, that is called to be as convection. And then there comes a radiation. Radiation is also a method of transferring of heat where it doesn't require any specific medium. जैसे कन्वेक्शन, कंडक्शन करने के लिए सॉलिड की रिक्वायरमेंट है, कन्वेक्शन करने के लिए लिक्विड्स या गैस की रिक्वायरमेंट होती है, बट रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक मीडियम. So it is just transferring the heat from one end to another end in the form of a radiation, and that makes the body feel warm, or it can change the temperature. Mostly it used to increase the temperature. Mostly the radiation used to be increasing the temperature of the body. Now, why I'm discussing this thing? Because until and unless we are not understanding, or we will not understand that how heat used to be transferred, we will not be able to understand the basic change or basic difference which is going to cause either by adding heat or by absorbing the heat. Now, the first thing which we are going to understand over here, that is the change in temperature. So when we supply heat, then what we do used to observe. When we are supplying heat, जब हम लोग heat supply करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि temperature में changes आती है. What kind of change we can observe? So if heat will be given in, अगर हम लोग heat देते हैं system में, तो हम लोग observe करते हैं कि उसका temperature जो होता है वो increase करता है. अगर हम लोग उसमें से हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इफ हीट विल बी टेकन आउट, then we will observe its temperature will decrease. So over here you have to understand this thing. On adding of heat in the system, we do increase the temperature. By removing out of the heat, means if you take out heat from the system, then it will cool down, so its temperature will decrease. So when you are putting anything on a gas burner, you will observe that heat been supplied. Because of that, what will happen is temperature will gradually increase. But on the other hand, if you take any warm object or a hot object and keep it in a freezer, what you will observe that after a few minutes or for a hour, you will observe that its temperature has been decreased down. So what is that? That is actually either adding of heat or absorption of heat. So if we are adding heat, temperature increases. If we remove out heat, means if we absorb heat, then we decrease down the temperature. That is also a very important thing which we have to understand over here. Next is the other thing which we had already understood earlier also, that is the change in the state of the matter when we supply heat. जब हम लोग heat supply करते हैं तो हम लोग matter के state को observe कर सकते हैं कि वो solid से liquid, liquid से gas में convert होता है. अगर heat को absorb कर रहे हैं तो वो gas से liquid और liquid से solid में absorb हो रहा है या transfer हो रही है. तो ये जो conversion of state है, that is because of the supplying of heat. हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता रहे थे काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. जब हम लोग सॉलिड में देखते हैं तो पार्टिकल्स टाइटली पैक होती हैं. जब इसमें हीट सप्लाई होती है तो ये क्या करता है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है, तोड़ देता है. And because of this, what will happen? The particles gets separate out, and as the particles are getting separate out, they move away from each other. और जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, that changes its physical state from solid to liquid. And if you are supplying more heat on that,
or if you are giving more heat to that liquid, what will happen? The intermolecular attraction force will become more weak over there. अगर इसमें और हीट सप्लाई करेंगे तो इनके बीच की जो जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो और कमजोर हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा? इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अनदर स्टेट, दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर. तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ द सप्लाइंग ऑफ हीट. इफ यू विल रिवर्स द फेनोमेना, अगर इसी फेनोमेना को रिवर्स कर दें, अगर हम बोलते हैं कि इफ वी कूल डाउन द गैस, then it will be converted to liquid. If you will cool down the liquid, it will be converted to the solid. How this is possible? This is just because of the change in the intermolecular attraction force. And who is changing the intermolecular attraction force? That is the amount of heat. If you decrease the heat, intermolecular attraction force will increase. If intermolecular attraction force will increase, then the movement of the particles will decrease. And if the movement of the particles will decrease, then we will observe the conversion in the state from gas to liquid and liquid to solid. So over here, we are having a small graph by which you can understand that how a solid gets converted to a liquid and how liquid gets converted to a gas. And over there, how the change in the energy level is there. How there is a change in the energy level, and because of that, we can observe that a gradual increase in the temperature also. As the matter used to change its physical state, we do used to observe that it is changing it with its temperature. So at the very beginning, if we take ice at 0 degrees Celsius and we are boiling it to convert it to steam, then we do observe that its temperature rises from 0 to 100 degrees Celsius. And as you know, temperature is the denotation of how hot or cold any object is. Thus, with this particular phenomenon or with this particular concept, we can understand that on supplying of heat, we do used to observe that the gradual temperature is also increasing, or due to the change in the physical state, we can say that there is a change in the amount of heat in it. Now, let's move to the next topic, which we have to understand, that is the effect of heat as the change in shape and size. तो जब किसी मैटर में हम लोग देखते हैं कि उसका उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, तो ये शेप एंड साइज कैसे चेंज होता है? तो ये शेप एंड साइज चेंज होती है बिकॉज ऑफ द सप्लाइंग ऑफ हीट. अभी अभी हम एक टॉपिक बता रहे थे कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लूज होता है. एज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वहां पे लूज हो जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस वहां पर इंक्रीज हो जाती है. इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर इंक्रीज हो जाती है तो पार्टिकल्स के पास ज्यादा स्पेस होता है टू मूव अराउंड, और इसी वजह से वो अपने शेप या साइज को चेंज कर देता है. इट यूज टू एक्सपैंड. व्हेन वी आर सप्लाइंग हीट, इट यूज टू एक्सपैंड. सो यहां पर अगर तुम इस लिक्विड में देखोगे तो यहाँ पे इस लिक्विड में हम 3 एग्जाम्पल लेकर किए हुए हैं. एट द वेरी अर्ली एज, द लिक्विड इज एट 70 डिग्री सेल्सियस. Now, if I will heat this liquid, अगर हम इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या होगा? इसके पार्टिकल्स रैपिडली वाइब्रेट करने लगेंगे, ये इधर उधर भागने लगेंगे और ये एक्सपैंड करेगा. तो पार्टिकल्स जैसे एक्सपैंड करेगा तो इस लिक्विड की खुद की वॉल्यूम में इंक्रीज कर जाएगी. तो जैसे इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, यू कैन सी दैट द टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस. इट इज डबल. सो आई हैड जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर टू डबल. हम उसको डबल कर दिए. तो यहाँ पे देखोगे कि लिक्विड का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है. व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज नाउ द पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली फार अवे फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन. इस प्रीवियस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो अभी पार्टिकल्स अच्छी खासी दूरी पर है. अगर हम इस टेम्परेचर को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, then what will happen? Then the liquid will expand so much that it will start coming out from its edges over here. So this is just because of the expansion. Due to the expansion, we do observe that the size or the shape used to change. So over here, we are observing for the liquid, the liquid's volume will increase over there. And not only for the liquid's volume, but you can take for any specific component over there also, you will observe the same thing. और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी समझने वाले हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए भी. तो जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और अच्छा एक चीज फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि जब हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज देखते हैं, जब हम लोग ये सब तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं, दैट कैन बी ओनली ऑब्जर्व्ड वेयर हीट कैन बी ट्रांसफर्ड.
अगर हीट को हम ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे तो ये सारे फेनोमिनास हम लोग वहां पर नहीं देख सकते हैं. सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल फॉर दिस वन, that over here this particular situation can be only observed where heat can be transferred among the components. तो यहां पर हम लोग देखते हैं तीन अलग अलग सिचुएशन. सपोज दैट इफ यू विल टेक अ वेरी थिन रॉड, ठीक है, एक पतली सी रॉड तुमने लिया है, एक मेटल सा, एक मेटल का तुमने एक पतला सा रॉड लिया है. से एज इट इज ऑफ अ सर्टेन लेंथ, एक पर्टिकुलर किसी एक लेंथ की है. से एज फॉर एग्जांपल आई अज्यूम इट एज ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की है. सो 1 मीटर इट मीन्स दैट इट इज 100 सेंटीमीटर. ओके. Now, if you will supply heat to its one of the end continuously, then what is going to happen? As we know that this metal is a conductor of heat, so what will happen? Heat will be transferred. So यहाँ पर heat कैसे transfer होगी? It will be transferred from one molecule to another, and so on and on and on and on and on and on, and it will reach till its last tip. ये इस पॉइंट तक ये हीट ट्रांसफर करेगी. एज इट इज अ थिन बॉडी, यहाँ पे ध्यान देना ये एक थिन बॉडी है, इसीलिए हीट जो है ये लीनियर मूवमेंट कर रही है. ये लीनियर मूवमेंट अपने सामने की तरफ कर रही है. इट इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स इट्स ब्रेथ. ये अपने ब्रेथ की तरफ मूवमेंट नहीं कर रही है बिकॉज इट इज अ थिन. सो मोर मॉलिक्यूल्स आर टुवर्ड्स दिस एंड. ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स किधर है? सामने की तरफ है. इसीलिए मूवमेंट भी किधर की तरफ होगा? सामने की तरफ होगा. यानी हीट का ट्रांसफर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगी. So when the heat been transferred from this end over here and it is traveling from one molecule to another molecule till its last point, after reaching over there, even you had made it warm, then also you are continuously supplying heat. Now what will happen? After the heat had reached to the last point or the last particle, even though you are supplying heat, what will result over there? It will give a result in the expansion form. यहां पर क्या होगा? एक्सपेंशन हो जाएगा. कैसे एक्सपेंशन होगा? देखो, जब हीट यहां पर सप्लाई कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे हैं, पार्टिकल्स और ट्रांसफर नहीं कर पा रही है हीट को, तो जब ये और ट्रांसफर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ये कमजोर कर देगी. And as the intermolecular attraction force will decrease down over there, it will start expanding. And when it will start expanding, its length will increase over there. So earlier it was of 100 centimeter as we had assumed it for 1 meter. Now it may possible that due to the supplying of heat, its new length became 105 centimeter. So over here, the delta L, that is the increased length, that is the increased value in the length will be observed just because of the supplying of heat. जो हम लोगों ने heat supply किया था, उसके वजह से ये हमको देखने को मिलेगा. और इस पर्टिकुलर तरह के एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन. जब भी किसी भी तरह के थिन कंडक्टिंग मटेरियल में हीट की सप्लाई होगी तो उस हीट के सप्लाई होने से वो अपने लेंथ वाइज इंक्रीज करेगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में ज्यादा पार्टिकल्स की प्रेजेंस है और उन पार्टिकल्स के प्रेजेंस के वजह से क्या होगा? वहां पर हम लोग देखेंगे कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है. So that is the particular thing which we have to understand in the linear expansion. So once again, what is linear expansion? So linear expansion is a kind of expansion which we do use to observe for any object where it is increasing along its length. If a body been supplied with heat, if we are supplying heat to a body and its length used to be increased over, then we do use to observe or we do use to say that it is a linear expansion. इसको हम लोग क्या कहेंगे? Linear expansion कहेंगे. So this is the thing which we have to understand. But what will happen if we will take a thin sheet? अगर मान लो हम लोग एक थिन रॉड के जगह पर अगर हम एक थिन शीट लेते हैं, सपोज देयर इज अ थिन शीट ऑफ मेटल and we are supplying heat to this from the middle. ठीक है, इसको किसी बर्नर पे रख देते हैं, कोई एक बर्नर है और उस बर्नर के ऊपर इस मेटल पीस को हम लोग रख देते हैं. सो द बर्नर इज गिविंग हीट, वो तो हीट सप्लाई कर रही है.
So as the heat is supplying throughout its all the edges, इसके क्या होंगे, हीट तो अब चारों तरफ से बढ़ेगी, चारों तरफ से जा रही है, so it is going to increase its length as well as its breadth. ये तो एक डायरेक्शन में तो हीट एक्सपैंड नहीं कर रही है, यहां पर एक डायरेक्शन में हीट एक्सपैंड कर रही थी. Why? Because in one direction only the number of particles was more. But in a thin sheet, we don't have such kind of condition. We have particles in all the directions. सारे directions में particles हैं. So heat भी क्या होगी, सारे directions में transfer होगी. तो जब सारे directions में transfer होगी, तो उसके length में भी हमको increase देखने को मिलेगा और उसके breadth में भी increase देखने को मिलेगी. तो लेंथ और ब्रेथ जब दोनों ही इंक्रीज कर जाएगा, तो यानी उसके जो डायमेंशनल वैल्यू होगी, यानी जो उसका एरिया होगा, वो वहां पर चेंज हो जाएगा. इट विल इंक्रीज बाय इट्स एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड टू बी एज द सुपरफिशियल एक्सपेंशन. जब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही साइड से वो एक्सपैंड कर जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन. बिकॉज ओवर हियर वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द बॉडी हैड गेन्ड अ न्यू एरिया. एक नया एरिया मिल जाता है बॉडी को. सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. So once again, for the superficial expansion, when heat used to be supplied to a material or a matter from the center, mostly we used to go for the center one, then only we will observe the proper condition for a conductor only. Then we will observe that its length as well as its breadth will increase. And when its length and breadth will increase over there, then we will observe that it will gain to a new area. And that new area will give us a superficial expansion. And then lastly, we have to understand a cubical expansion. So what is cubical expansion? So when we do use to understand for a cubical expansion, then we observe that if a block of wood, or not wood, I will say, a block of metal been taken in such a way that it is a very thick one, okay, like this kind of thing. Here I had said a thin sheet of metal. Here I'm saying that a thick block of metal you will take, and if you will supply heat from one end, what will happen? You will observe the heat will be transferred all along its body, and it will change its length, its breadth, as well as its height. So when the length, breadth, and height all are going to change over there, then we will observe that the body will gain a new volume. अगर हम लोग एक थिक ब्लॉक लेते हैं और उसमें हीट सप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा, उसका ब्रेथ भी इंक्रीज होगा, उसका हाइट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है. हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है? वो ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफर हो रही है, वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रही है. जब वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होती है, जब वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती है, सो वो हर डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी. वो अलोंग लेंथ भी ट्रांसफर होगी, वो अलोंग ब्रेथ भी ट्रांसफर होगा, वो अलोंग हाइट भी ट्रांसफर होगी. जब इन सभी तरफ से वो ट्रांसफर होगी, तो जो एक्सपेंशन हमको दिखेगा वो उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में ही दिखेगा. सो अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही कंडीशन में अगर एक्सपेंशन होती है, देन वी विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम. हमको दिखेगा कि वहां पर उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाती है. And that is the thing which we have to understand for the cubical expansion. यहां पर हम लोग cubical expansion देख रहे हैं. तो जब भी किसी भी तरह के मेटल ब्लॉक, जो कि एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडिकल शेप में हो सकता है या किसी दूसरे तरह के शेप में भी हो सकता है, जहां पर कि उसके पास एक ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया हो, जहां पर उसके पास एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उस जगह पे जब हम लोग वहां पर हीट सप्लाई करते हैं, तो वो हीट एक बड़े सरफेस एरिया पे जाने की वजह से उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मींस in all the direction it will expand. So ultimately the result will be there that the volume has been changed, the volume has been increased over there. That is called to be as cubical expansion. Okay, so I hope that you had understood till here.
So if there are any kind of trouble or any kind of problem you are facing with this particular topic, then we can discuss it in our next class. Today I'm keeping the class till here only. I will once again start from this particular topic as the linear expansion, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन. हम फिर से इन्हीं तीनों टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है और फिर हम लोग समझेंगे कि उन फॉर्मूला को यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करना है और फिर उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, लीनियर एक्सपेंशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सुपरफिशियल के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और क्यूबिकल एक्सपेंशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विथ एन एनिमेटेड वीडियो. एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो के साथ हम इन तीनों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे. सो यू प्लीज रिवाइज टिल हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So thank you for today. Good night.